हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ा लॉजिक रो सेकंड चैप्टर सिलोजिज्म. द अदर नेम ऑफ सिलोजिज्म इज इमीडिएट डिडक्टिव इन्फरेंस. लास्ट चैप्टर आम पढ़ते इमीडिएट डिडक्टिव इन्फरेंस. से कौन होता कंक्लूजन टा गोटे प्रपोजिशन बा प्रेमिस ड्रॉन होता. बट सिलोजिज्म बा इमीडिएट डिडक्टिव इन्फरेंस रे द कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम टू प्रपोजिशंस टेकन एज द premise. So first of all, what is syllogism? Syllogism is a form of immediate deductive inference in which the conclusion is drawn from two propositions taken as the premises. It is of two types, that is pure syllogism and mixed syllogism. So syllogism रे conclusion टा दुईटा proposition लो drawn हुए जहाँ की premise रूपे ग्रहण करा जाए थे. Next, what is characteristics of syllogism? A syllogism has three propositions, of which two are the premises and one is conclusion. Next, a syllogism has three terms. These are middle term, major term and minor term. Middle term, it occurs twice in the premises. Major term occurs in the major premise and in the conclusion. Minor term, it occurs in the minor premise and in the conclusion. The conclusion of a syllogism necessarily follows from the premise. This means that the conclusion of a syllogism is drawn from the premises. Okay. Next, syllogism being a deductive reasoning, its conclusion cannot be more general than the premises. So syllogism ro conclusion ta premise ठारू more general होई परिबो नाही. Structure of syllogism. Symbolic example. All M is V, all S is M, and conclusion all S is V. Here, तीनटा proposition अच्छी. All M is V, all S is M, all S is P. या मध्यरु first इटा होची premise. First टा कुआ जाए major premise, second टा कुआ जाए minor premise, and last one is conclusion. हमें कौन जान ले? Middle term टा twice occur हुए. कोठी? मिडिल टर्म टा ट्वाइस अकर हुए प्रेमिस रे. देखो एठी होची एम टा मिडिल टर्म, एठी एम होची मेजर प्रेमिस रे एम होची, माइनर प्रेमिस रे एम होची. सो हियर एम इज मिडिल टर्म. देन जो टर्म टा मेजर प्रेमिस रे थाए आ कंक्लूजन तो थाए सेटा होची मेजर टर्म. मेजर प्रेमिस रे पी होची, कंक्लूजन ले भी पी होची. सो दिस इज मेजर टर्म. आ जो टर्म टा माइनर प्रेमिस रे थाए आ कंक्लूजन ले भी थाए सेटा होची माइनर टर्म. एस टा माइनर प्रेमिस रे अछि, कंक्लूजन ले भी अछि. सो एस इज योर minor term. Concrete example. All animals are mortal, all men are animals, all men are mortal. Here middle term होची animals, major term होची कौन mortal, and minor term होची men. Middle term animals इस पे कारण एटा premise रे twice occur होची animals. Major term टा एटा mortal, major premise अछि. A minor term टा होची men, minor premise होची. Kinds of syllogism. Syllogism is of two types, pure syllogism and mixed syllogism. दुईटा important short types प्रति alternative year रे exam रे आसुची. So write down it. The subject of conclusion is minor term. The predicate of conclusion is major term. The subject of conclusion, here man is the subject, so this is minor term, and the predicate of conclusion is major term. Predicate here is mortal, so this is major term. Next, figure of syllogism. Figure of syllogism is determined as per the position of the middle term in the premises. There are four figures of syllogism. They are first figure, second figure, third figure and fourth figure. आम चार्टा फिगर ऑफ सिलोजिज्म अच्छी. और फिगर ऑफ सिलोजिज्म टा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म इन द प्रेमिस रे पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म को लक्ष्य करा जाए फिगर ऑफ सिलोजिज्म टा डिटरमाइन हुए. एटा एग्जाम रे क्वेश्चन आसी पारे. व्हाट इज फिगर ऑफ सिलोजिज्म? सो राइट डाउन इट एंड रिमेंबर इट. सो फर्स्ट फिगर. इन फर्स्ट फिगर द पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म इज सब्जेक्ट इन द मेजर प्रेमिस एंड प्रेडिकेट इन द माइनर प्रेमिस. मेजर प्रेमिस रे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रे and minor premise रे predicate. M term टा होची middle term. In second figure, the position of middle term is predicate in both the premises. Second figure रे position of middle term टा होची
उभय मेजर प्रेमिस एंड माइनर प्रेमिस से प्रेडिकेट. In third figure, the position of middle term is subject in both the premises. Third figure रे position of middle term होची उभय major premise and minor premise रे कौन subject. In fourth figure, the position of middle term is predicate in major premise and subject in the minor premise. So fourth figure रे position of middle term होची predicate in the major premise and subject in the minor premise. आज आम फिगर ऑफ सिलोजिज्म जानले काली मूड्स ऑफ सिलोजिज्म जानिया आउ जनरल सिलोजिस्टिक रूल्स ऑफ सिलोजिज्म विषय भी जानिबा. तुम मैंने नोट्स लेख मो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर आउ एइथिरु ही तुम एग्जाम रिलेटेड सब किछि क्वेश्चंस तमे पाई परिबो. थैंक यू.